Hi guys, a lot of you are asking me how to set up your own practice right after your MBBS or basic graduation, and a lot of you are having questions कि patients आते भी हैं क्या, is it a valid option? हमारे सब दोस्त लोग तो बोल रहे हैं यार पीजी करो नहीं तो कोई करियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है. तो today I am going to share this in the most honest and direct manner, because for the last 6 years I have been very active in private practice and setting up numerous clinics. तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ इज़ अ वेरी लो कॉस्ट, वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट, बट एक प्रॉफिटेबल मॉडल जिसमें आप एक ऐसा बेसिक ग्रेजुएट डॉक्टर जस्ट फ्रेश पास आउट विदाउट एनी एक्सपीरियंस, आप 3 to 4 टाइम्स मोर देन जो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स आपको पे करते हैं उतना आप कमा सकते हैं. एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कमाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट्स को ढंग से ट्रीट कर सकते हैं, अपनी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, एंड यू कैन इम्प्रूव health. That's what you are, that's what you're here for, right? That's why you became a doctor. So money is secondary, but you should be able to treat patients. Of course sustainability होनी चाहिए, और वो उसका मैं तरीका आपको बताऊंगा. अच्छा, और ये लोग जो बोल रहे हैं ना, या मेरे दोस्त ने खोला है वो ख़राब हो गया, मेरे कज़न ने खोला है ये हो गया, पीजी नहीं करोगे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुम्हारा सब ये सब इशू हो जाएगा. तो आप लोगों का मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई देखो, एटलीस्ट फॉर क्यूरियोसिटी ये वीडियो आप देख लो, और फिर बाद में आप अपना ये जो फैला रहे हो वो फैलाते रहो, क्योंकि ये सच तो है नहीं. और क्यों ये जो आपके जो सो कॉल्ड दोस्त हैं, कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं जिनके क्लिनिक्स नहीं चले, उसका भी मैं पोटेंशियल रीजंस एंड में बता दूंगा. सो गाइज, दिस इज़ इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर यू टू नो वेदर यू फॉलो इट और नॉट, बट ये ऑप्शन होना, ये ऑप्शन है और बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन है, और कैरियर ग्रोथ भी है इसमें. ये नहीं है कि बस इसके बाद क्या, बट आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग. सो बेयर विथ मी एंड लिसन टू हाउ यू कैन start your own clinical practice, and how I can help you accelerate that process by being a part of this. ठीक है? So first guys, the first thing that I would recommend, हालांकि आप इमीडिएटली भी एक अपना क्लिनिक खोल सकते हैं राइट आफ्टर योर इंटर्नशिप एंड यू हैव गॉट योर डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड योर स्टेट रजिस्ट्रेशन. आप इमीडिएटली भी क्लिनिक खोल सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड डूइंग दैट, बिकॉज आई फील यू नीड टू हैव some understanding of how treatment is happening. क्या मेडिसिन्स हैं, क्या ब्रांड नेम्स हैं, कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं पेशेंट्स को देखने के लिए, फॉलो अप करने के लिए, कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जहाँ पर आप प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हो, या पेशेंट्स को देख सकते हो, कौन पास में लैब्स है, कौन सा लोकेशन है. ये सब करने से पहले थोड़ा सा आपको ग्राउंड वर्क रिसर्च करना पड़ता है, एंड सबसे पहले ये समझना होता है कि द मोमेंट यू आर पास्ड आउट, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू अ हाई पेइंग जॉब लाइक your engineers or other colleagues, because this is not that kind of a field where just by reading books and looking at some clinical postings and presenting cases and collecting reports as an intern, आप independently patients को देख पाओगे और 50,000, 1 lakh, 2 lakhs की सैलरी इमीडिएटली डे वन से डिमांड करोगे. दैट्स वेरी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन. आई नो यू वर्कड हार्ड, आई नो इट्स नॉट बीन ईजी, बट इट इज़ नॉट फेयर एंड करेक्ट for someone to expect that kind of a pay when you do not really even have acquired the abilities to treat patients end to end. ठीक है? So here's what I did and what I recommend you also to do is, see, you would have studied in some medical college, you would have come in touch with some professors, assistant professors, associate professors and teachers. You may have liked 1 or 2 fields, and you must have developed a rapport. Some teachers are always friendly, some teachers are not, but कुछ teachers या कुछ senior residents या कुछ doctors के साथ आपका संपर्क हुआ होगा जो अपना practice करते हैं, evening practice करते होंगे. आप उनके साथ जाके 2 या 3 months के लिए एक तरह से एक observership या shadowing कीजिए. This is very important, because what is taught in your books and what you mug up and learn to pass your entrances, so not exactly how it takes place when you are seeing patients when they are in front of you. Now in a medical college, थोड़ा सा सरकारी टाइप सीन होता है कि पेशेंट आए जाए नहीं जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, अपने को सैलरी मिलती है. बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अलग होता है. The way doctors and patients interact, it is more of a consumer and commercial engagement. तो वहाँ पर बहुत सारी अलग चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ें, और पेशेंट्स के क्वेश्चंस अलग होते हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, एंड हाउ दे आर ट्रीटेड इज़ ऑल्सो लिटिल डिफरेंट. आई मीन ऑफ कोर्स the always best interest to treat patients, but I think protocols are more tightly adhered to in the private sector, because the doctor is also very worried about things backfiring and then affecting his entire practice.
आई यूज टू अर्लियर थिंक दैट प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा झोल झाल होता है कुछ जगह में, बट एनी सीजनड doctor is going to be a lot more evidence based, lot more research oriented, and lot more what do you say, diligent in their care in private practice, because their career depends upon it, right? They cannot afford to take risks, they cannot afford to have a bad patient outcome, so they are a lot more I would say adhering to patient care, and that's what I've seen and experienced. So 3 months I think you should dedicate, and those 3 months which you were anyway planning to prepare at home, or 3 months that you were anyway your living cost for 3 months you have to bear. This is the best practice, and identify a doctor who sees many general patients. Okay, so internal medicine physician या ENT, community health doctors, या जिनका भी जो general practice कर रहे हैं, and try to see how different people are treated, so that when you are sitting in your own clinic there are two benefits. One is that एक तो इन्हीं डॉक्टर के पेशेंट्स के फॉलोअप्स आपको देख देख के समझते हैं कि हाँ ये एक सीनियर डॉक्टर के साथ ट्रेंड है, तो वो ट्रस्ट आप पे भी पास आउट होगा। और सेकंड, जब आपके पास एक पेशेंट आएगा तो आप यू विल नॉट बी लाइक अरे इसको कैसे हैंडल करते हैं, राइट? और अगर ऐसा आ भी गया तो आपके पास ये सीनियर हैं जिनके साथ आपने शैडोइंग और ऑब्जर्विंग की, जो आप उनको बता सकते हैं या उनको रेफ़र कर सकते हैं या उनकी गाइडेंस आप ले सकते हैं, राइट? Now, why will some doctor allow you like that? See, if you are going as a free observer, any clinic doctor is always happy to have more help and support. कोई ऐसा मना नहीं करेगा, and eventually what I have seen, guys, and this is something that we doctors also believe. We respect other people's work, and generally somebody who has a good rapport with you will do this. Maybe first few weeks they'll try to gauge, are you of any help or value while you're doing your observership. अगर आप थोड़ा सा हेल्प करते हैं, मे बी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में, या पेशेंट का इनिशियल वर्कअप करने में, एंड फिर प्रेजेंट करके आप बाकी सब कर रहे हैं, इवेंचुअली दीज डॉक्टर्स विल ऑल्सो गिव यू सर्टन अमाउंट ऑफ देयर अर्निंग्स, बिकॉज यू आर इवेंचुअली बिकमिंग ऑफ हेल्प. एंड आई थिंक 3 months इज़ अ वेरी गुड टाइम टू अंडरस्टैंड डायनामिक्स ऑफ किस तरह के पेशेंट्स आते हैं. And then you can set up your own clinic. Now, what does it take to set up a clinic, guys? I have worked in large cities as well as in rural areas. I've set up about 7 clinics all over the country. If you want to hire a small chamber, 200 square feet to 500 square feet, typically the range of rentals will be between 7,000 rupees to 50,000 rupees. ठीक है, depending upon how prime the location is. आपने शुरू में prime नहीं लेना है. Try to identify something that is between that 7 to 15,000 or 20,000 rupees per month rent. Okay, and be willing that for the first 3 months you are not going to make any profits or break evens, because there are 3 A's of clinical practice. I think any senior doctor will also tell you that accessibility, availability, and affordability. So you have to be available. So find a location where you can be available first. Don't think about अरे पास में एक डॉक्टर है, compete कर लेगा, वो हो जाएगा, वो मत सोचो. आप कहीं पर भी होगे, आपके पास कुछ पेशेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इतनी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट होती है. बट फाइंड अ प्लेस वेयर यू कैन बी अवेलेबल easily, right? Take it on rent. See, this is a small shop or this is a small place, or there is somebody who's opened a polyclinic and willing to rent out a chamber to you. वो तो और भी सस्ता पड़ेगा, और आपके पास फिर सेक्रेटरी और बाकी सब चीज़ें की रिसोर्सेज भी होंगी. और आजकल बहुत सारे ऐसे पॉलीक्लिनिक्स बने हुए हैं जहाँ पर दे डोंट माइंड कि फ्यू आवर्स अ डे और पर्टिकुलर चेम्बर कोई ऑक्यूपाई करे, और बहुत सारे रेवेन्यू शेयरिंग पे भी कर लेंगे या छोटा सा रेंटल लेंगे, वो तो और भी सस्ता रेंटल होगा. बट मैंने जितने भी क्लिनिक्स खोले हैं बिटवीन आई थिंक 7,000 to 15,000, इवन इन बिग सिटीज़ नॉट मोर देन 20,000 पर मंथ आई हैव पेड फॉर rooms as big as 500 square feet. Okay, maybe one clinic is 25,000, अदरवाइज उससे ऊपर का खर्चा नहीं गया है. अगर खाली चेम्बर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप छोटा सा भी अगर कैबिन जैसा अगर बनाते हैं या एक डेस्क और टेबल या कुछ अगर लगवाते हैं, तो उसमें भी इनिशियली अराउंड 15-20,000 रुपीज़ का खर्चा आएगा. सो यू कैन अज्यूम दैट 50,000 रुपीज़ इज़ अ वेरी डिसेंट सेटअप कॉस्ट फॉर अ clinic that you are putting in. Print out a prescription pad, get a steth, get an otoscope, get whatever basic equipment that you have, put up a small board and open shop. Maybe sit there and start studying, preparing for your entrances, या जो कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, you can sit and do it over there. But
once you're able to do this, after that 3 months, कुछ वहाँ के follow up patients भी आपके पास आएंगे, नहीं तो आसपास के लोग भी आपके पास आएंगे. And this is where it is important that the patients that you see, give them good amount of time, clarify all their doubts. Maybe कुछ आएंगे बोलेंगे अरे जूनियर डॉक्टर है, जस्ट पास आउट और चले जाएंगे, जाने दो. ऐसे हमेशा कुछ पेशेंट्स रहेंगे. दे आर ऑल्सो नॉट द राइट काइंड ऑफ पेशेंट्स फॉर यू टू सी, बट कुछ होंगे जिनकी ज़रूरत होगी. Maybe it's a dressing, maybe it's a wound, maybe it's a home visit nearby, or maybe it is a basic cough and cold, something they will come for some basic care. You can charge for a freshly passed out graduate anywhere between 200 to 350 rupees, maybe even smaller towns 150 rupees. But typically that is the norm nowadays, where it is very very acceptable for a quick consultation and first point of care thing. And it will take first 2-3 weeks में शायद आपके पास 2 या 5 पेशेंट भी नहीं आए, लेकिन जो ये 2-5 पेशेंट आएंगे, अगर आप इनको ढंग से देखोगे, ढंग से फॉलोअप करोगे, इनके वर्ड ऑफ माउथ से आपके पास आने लगेंगे. लाइक आई टोल्ड यू, you cannot be a good doctor whether in a hospital or anywhere else. You cannot survive or grow if you're not good at what you're doing, right? So if you have good knowledge and you're able to see the patient, you have good guidance, आप ढंग से देखेंगे तो patients आपके पास automatically word of mouth से follow up पे भी आएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी बोलेंगे. Generally a good location is that at least in that 1 kilometer radius there should not be any other healthcare facility of general private practice. And if you're close to societies or housing colonies, where they don't want to go very far away, aajkal convenience is the way. In the next 10-15 years people are going to rely more on convenient healthcare, accessible healthcare, and not best doctor, best hospital. wo jate hain when they have complex conditions. But generally for the cough cold, they don't want to take half the day off and go to some big hospital and see a best doctor. ये एक बहुत important trend है जो आपको समझना है, जो आप अभी भी सोच रहे हो कि they want to go to a specialist for these kind of things. That is not true. Okay. And and home visits also, to just do, somebody has bed sores, they're bedridden, is an elderly person, and even if you're a junior doctor, there's usually no issues. They expect someone to come at home and see. And for home visits you can easily charge anywhere between 500 to 1000, because people know that this is for any home visit, even if it is वो अर्बन क्लैब से अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक चीज़ के लिए भी करते हैं तो इतना खर्च करते हैं. तो होम विजिट्स एनीवे पीपल एक्सपेक्ट टू पे अ प्रीमियम. ये नहीं है कि 100-150 में कोई होम विजिट करेगा. 500 to 700 to 1000 रुपीज़ एक्सेप्टेबल होता है किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, या गाँव में भी हो, या जगह सेमी अर्बन हो, या अर्बन एरिया में भी हो. और ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नहीं है पैसे देने को. ये बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है दैट पीपल डोंट हैव द एबिलिटी टू पे. देयर मे बी सर्टन पॉकेट्स, बट डोंट वरी अबाउट इट. किसी भी फील्ड में ऐसे लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे या जो आपको जज करेंगे, जो नहीं आएंगे, लेकिन देयर विल बी ऑलवेज अ proportion of patients who will need you and come to you, and that is what you need to focus on. Even though that is small, if you treat them well, that is what is going to grow for you. And the average rule of thumb is, if you are a decent doctor practicing and patients are having good results, within 3 months you will reach 8 to 10 patients per day, and that is the sweet spot. Even at 200 rupees you have 10 patients per day, you're making 2000 rupees per day, 60,000 rupees per month, which is, if you have spent 50,000 as your initial thing and after that you're spending 15 to 20,000 running costs, आप 30,000 per month बना रहे हैं. तो थर्ड मंथ में आप ब्रेक इवन 6 मंथ में आप ब्रेक इवन करते हैं, और उसके बाद से 30,000 पर मंथ आप प्रॉफिट बनाते हैं. और अगर आप थोड़े से एस्टैब्लिश हो गए और उसी को आपने 300 या 350 या 400 कर दिया, तो वही 60,000 1.2 लाख से 1.5 लाख हो जाएगा. और अगर आपके पेशेंट वॉल्यूम बढ़ने लग गए तो 15-20 पेशेंट्स, 25 पेशेंट्स पर डे इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस. एंड that itself is roughly a 4 to 5,000 rupees per day business. And weekends पर typically उससे 20-30% ज़्यादा ही होता है. You will easily be able to see patients, and if you are accessible, you are close by, you can also go and come, or you can have someone who takes your appointments or call you in a number, so you don't have to be sitting there all the time also, and still be able to manage. Yeah, you can sit there for 6 to 8 hours anyway. आप बैठ के कहीं ना कहीं तो बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या अपने फ़ोन पे हो, आप वहाँ पर भी अपने ऑफिस स्पेस की तरह बैठ के आप काम कर सकते हो. एंड दिस इज़ वेरी वेरी रीजनेबल. एंड हाउ डू यू स्केल, हाउ डू यू ग्रो? सो
let's say that while doing this you're getting clinical practice, you have not now put all your eggs in one basket, right? आप प्रिपेयर भी कर रहे हो पीजी के लिए और आपने अपना क्लिनिक भी खोल रखा है और धीरे धीरे पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आपने वो जो वेटिंग वाला टाइम है वो आपने क्लिनिक में डाल दिया है, सो दैट आफ्टरवर्ड्स यू डोंट हैव टू वेस्ट 3 more months 6 months टू सेटअप। आप पढ़ाई करते करते आपने वो काम निपटा लिया है और अब आपके पास जनरल पेशेंट फ्लो आ रहा है। देन व्हाट हैपेंस इज इवेंचुअली जब 10-15 पेशेंट्स पर डे आते हैं, आपको अप्रोच करेंगे पीडियाट्रिशियंस, इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ये लोग अप्रोच करेंगे क्योंकि अब आपके पास बेस पेशेंट आ गए हैं, इनको फिर बाद में स्पेशलिटी केयर चाहिए होगा। तो आप अपने ही सेंटर को आसपास या इसमें डिवाइड करके टाइमिंग्स में पॉलीक्लिनिक बना सकते हैं, सो दैट योर ओन पेशेंट्स विच यू सी नाउ विल ऑल्सो गेट स्पेशलिटी केयर देयर। एंड टिपिकली स्पेशलिस्ट लाइक अस are not paid salaries anywhere. We are usually in revenue sharing, and very few hospitals, you know, when you are established and you get certain amount of revenue for the hospital, तब वो उसका 1/3 आपको सैलरी देते हैं, but otherwise most of the time आप एक revenue share करते हैं और जो standard revenue share terms होता है वो है 30% to the facility maximum, okay, 10, 15, 20 up to 30%. The doctor keeps 70% of his or her consultation fee और 30% फैसिलिटी को जाता है। तो अब आपके पास अपने पेशेंट्स की भी इनकम आ रही है और अब आपके पास बाकी डॉक्टर्स का 30% रेवेन्यू शेयर भी आ रहा है। आपके पास लैब्स भी अरेंज मतलब आपको अप्रोच करेंगे और फिर उसमें जो रेफरल फ़ी होती है वो रेफरल फ़ी और रेफरल कट इज़ नॉट अ ब्राइब, ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, जस्ट लाइक एनीथिंग दैट रीचेज यू, any tool that reaches you, any phone, any cloth, everything that reaches you has a distribution pathway and there is a distribution fee which you have already paid for in the cost of that service or that product. So if there's a lab test or blood test that is happening, then just like a consultation fee, there is also a lab fee or a lab referral fee that is incorporated, and you make that revenue because you are giving somebody business for it, and they are getting, and your patients are getting to get that facility at your clinic or at the home. And this is how basically it becomes polyclinic to nursing home, and this is the trajectory that happens. But what about your personal growth? बोलोगे यार मेरे को सिर्फ MBBS बन के थोड़े रहना है, तो यार there are lot of fellowships, there are lot of certification courses, बस आपको देखने की ज़रूरत है। IGNU conducts a lot of courses, very very good quality courses. There are basic cardiac courses also are there. There are diabetology courses, there are cosmetology courses. Not only IGNU, there are a lot of established doctors in their own private hospitals run their own fellowship programs because that's how they get certain resources also. लोग आ जाते हैं fellowship सीखने में, but उनके पास volumes होते हैं। आप एक skill generate करते हो, वो एक certification भी आपको देते हैं। आपको क्लिनिक के लिए कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलते हो कि आप सर्टिफाइड डायबिटोलॉजिस्ट हो, आप सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, या आप सर्टिफाइड कार्डियक would you say physician ho, I mean you're not a cardiologist, but you can there are certain diploma courses of cardiology. So you're a diploma in cardiology. I know IGNU runs a course like that. So there are a lot of these courses and fellowships and specializations that you can do. If you have to start attending conferences, and when you attend conferences, there are a lot of announcements for these kind of fellowships and specialty certifications which you can find and do and build your expertise in it. It's not about the value of the certificate, it's about how much you learn, and then you can start treating patients and find your own referral pathway. And that is how you can establish your clinic. And the only way this will not work, like कुछ लोगों के दोस्त कजिन्स जिनके क्लिनिक नहीं चले हैं, वो इसलिए नहीं चले हैं क्योंकि या तो उन्होंने डेडिकेटेडली इसको फॉलो नहीं किया है, वो एक्सेसिबल नहीं रहे हों, या अवेलेबल नहीं रहे होंगे, या अफोर्डेबल नहीं रहे होंगे, और दे वर नॉट इंटरेस्टेड और गुड एट व्हाट दे वर डूइंग। थोड़ा सा उन्होंने या तो एडिक्वेट टाइम नहीं दिया। कुछ लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते बोलते हैं यार यहाँ कुछ हो नहीं रहा, बंद कर देते हैं। यू हैव टू गिव 3 to 6 months. दे डोंट नो दैट 3 to 6 months इज kind of how much you need to wait, and because of those reasons उनका नहीं चला होगा। But also guys, there's another important thing over here that in addition to the time that you give
There is also some technologies. You can have an ECG machine, you can have a physiotherapist that is also there with you, and a lot of other allied things that you can do to make more value for your clinic. And you can also visit other hospitals if you're if you want to do some basic procedures and surgeries. You can learn some MBBS doctors or basic graduation doctors are allowed to do certain basic surgical procedures, certain emergency procedures. You can also be a duty doctor at night in certain hospitals, run your clinic during the day, and it is very very easy to make anywhere between 75,000 to 1.5 lakh rupees पर मंथ पोस्ट योर ग्रेजुएशन. अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं बहुत स्ट्रगल करके मैंने अपने 5-6 साल किए, मुझको डायरेक्टली 3 या 5 लाख मिलने चाहिए, तो प्लीज़ आप ये जॉब ढूंढिए. जो अगर आपको देता है आप बेशक लीजिए. अगर आप not good with seeing patients, you don't have the people skills, and patients are not having good results, and you're not liking the clinical work, then you look for a job where they will give you money for not doing your work, because that is the only place where that is possible. वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं है. प्राइवेट हॉस्पिटल होगा वो आपको ले ऑफ कर देंगे. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मिल गया तो फिर आप वहीं क्वार्टर में रहिए और क्वार्टर लेते रहिए. Right? So these are the ways you can do it. Now how can I help? Okay, sometimes you may say that थोड़ा सा एक स्पेशलिटी डॉक्टर की अगर मतलब एक्सेस होता है तो हम प्रोवाइड करते हैं. सो आई हैव डिवाइस्ड अ टूल विच इज़ अ पोर्टेबल ईयर नोज थ्रोट एंडोस्कोप. उसमें हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ द सेंटर्स दैट हैव डेवलप्ड, वी हैव freshly passed out doctors where I train them in the endoscopy procedure to do ear, nose and throat endoscopy. और हमने एक रिमोट टेली एग्जामिनेशन सेंटर्स उनके क्लिनिक्स में सेट किया हुआ है. सो वो क्या करते हैं, जब वो जनरली पेशेंट्स को देखते हैं तो दे मे सी द ईयर, नोज एंड थ्रोट, बट दे मे नॉट हैव द नॉलेज गैप ऑफ that clinical experience, right? And I have seen millions and millions of these ear, nose and throat endoscopes. So I see those images on my phone, those videos on my phone. I ask a few follow-up questions, get on a call with the doctor, and I'm able to guide the doctor कि आपको ये ट्रीटमेंट करना चाहिए और ये फॉलोअप करना चाहिए. और जब इस पेशेंट को सर्जरी होती है तो मैं उस सिटी में जाके या उस विलेज में जाके नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके हम ऑपरेट कर लेते हैं. वी प्रोवाइड डेफिनेटिव केयर. राइट. इसमें देर इज़ एडिशनल कॉस्ट. बेसिकली जो डिवाइस का कॉस्ट होता है वही आपको बेयर करना होता है, एंड दैट इज़ 35,000 रुपीज़ इन द मार्केट. बट फॉर हेल्पिंग MBBS डॉक्टर्स और बेसिक ग्रेजुएट डॉक्टर्स सेट दिस अप, हमारी टीम उसको टेली एग्जामिनेशन सेंटर को एस्टैब्लिश करने के लिए उस डिवाइस को 20,000 रुपीज़ में देती है. और इसमें आपका जो ट्रेनिंग होता है वो इंक्लूडेड है, एंड उसके बाद जो आपको सपोर्ट दिया जाता है थ्रू द phone and all of that for the first 1 month is free, and after that there is like a revenue share, just like how you would do with any consultant. And that way we are also able to provide care and create impact. And आपके लिए भी आप बोल सकते हो कि हम एक अटैच्ड हैं इस पर्टिकुलर डॉक्टर के साथ जिनकी ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं. सो यू कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश योर क्लिनिक एंड ब्रांड योर क्लिनिक एज नॉट जस्ट अ बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी बट ऑल्सो एज अ specialty healthcare facility. And people really respect technology nowadays, guys, and especially technology जो transparently चीज़ों को दिखाती है. तो जो कॉफ, कोल्ड और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स के साथ लोग आते हैं, अगर आप उनको दिखाते हो आपका कान ऐसा, आपका नाक ऐसा, आपका गला ऐसा, आपका इन्फेक्शन है, इधर पस आ रहा है, इधर छेद बना हुआ है, इधर ये हो रहा है, दे डोंट क्वेश्चन दैट. जब आप कुछ चीज़ देखते हो और फिर उनको एक्सप्लेन करते हो, फिर उनको लगता है पता नहीं सच बोल रहे हैं कि नहीं, तो फिर वो सेकंड ओपिनियन लेने जाते हैं. बट अगर आप कोई भी क्वालिफिकेशन की और आप दिखा रहे हो कि बॉस ये तो कोई आपको ये प्रॉब्लम है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कैमरा में, अभी आपके सामने लिया है मैंने, और एक सीनियर डॉक्टर कहीं और से बैठ के बता भी रहे हैं ये हो रहा है, दे टेक दैट वेरी सीरियसली एंड फॉलो इट. एंड वी हैव नॉट रियली फेस्ड एनी कंसर्न्स with this approach, because this is a medically qualified device, CDSCO certified, Government of India supported device. I'm a qualified specialist, you're a qualified doctor, and for setting up of a clinic, basically you need the space, you need your certifications, and you need your local state medical councils approval. So like for example in Karnataka we have to register with the state health ministry or the state health government, which you will find a lot of agents who will get you the certifications and that give you a trade license. वो trade license से आप यहाँ पर अपना क्लिनिक प्रैक्टिस खोल सकते हैं. और फिर लोकल जो वेस्ट मैनेजमेंट बॉडीज़ होती हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट बॉडीज़ के साथ टाई अप करना होता है, जो आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको वो क्लियर करने के लिए. तो ये सर्टिफिकेशंस में कुछ 5-10 हज़ार रुपये जाता है एक्स्ट्रा, और बाकी
रनिंग कॉस्ट है आपके, एंड अगर आपके पास फिर यू हैव अ नर्स और यू हैव अ सेक्रेटरी, उनके एडिशनल कॉस्ट हैं, बट एज योर क्लिनिक ग्रोज you can grow with that and build a very healthy practice, and you can be of use to people immediately rather than spending years and years just sitting in a room and just mugging up things trying to hope that कि यार एक PG क्रैक होगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी. If you look at the number of doctors who commit suicide and number of doctors who drop out from their PGs, it is proof that they realize कि थिंग्स आर नॉट वॉट यू थॉट और वॉट यू इमेजिन वंस यू गो देयर. या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जब आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस खोलेंगे तो आपको यही सारे स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा. हो सकता है कि शुरू में आप थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर सकते हो या थोड़े से आपके पास पेशेंट ज़्यादा आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे सस्टेनेबिलिटी तो तभी होगी व्हेन पेशेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू योर ट्रीटमेंट एंड डूइंग वेल. ऑलराइट, सो विद दिस वे गाइज यू कैन स्टार्ट अप योर क्लिनिक. And if you want to be associated with us, at least for all general ENT problems, me and my team can guide you with our technology, which has enabled कि आप remotely कहीं पे भी किसी को at least ear, nose, throat और upper respiratory tract पेशेंट्स देख सकते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, नॉट ओनली इन ENT बट ऑल्सो इन पीडियाट्रिक्स एंड ऑल्सो इन इंटरनल मेडिसिन. अधिकतर लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, and this is a big chunk of patients that can be seen. So with your clinical growth, once you reach 10 to 15 to 20 patients per day, 200 to 300 400 rupees, you can easily make 60,000 to 1.5 lakh. And once it becomes a polyclinic, then you get an additional doctors revenue share, and once you get labs associated, you get more revenue share from there, and that's how you grow into a polyclinic. And this, अब अगर आपके पास 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये भी नहीं है, then there are micro loans that are available for doctors which are unsecured, and you have to take that leap of faith, and you have small loans of even 1 lakh rupees, 2 lakh rupees with very basic EMIs of like 3,000 rupees, 5,000 rupees per month में आपको माइक्रो लोन्स आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. डॉक्टर लोन्स तो इनफैक्ट टू सेटअप क्लिनिक्स 50 lakhs to 1 crore तक के लोन्स भी ग्रेजुएट्स को मिलते हैं. and these are not कि आपकी कोई एसेट या घर गिरवी हो रही है. दे आर अनसिक्योर्ड लोन्स, दे आर मेंट टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, एंड देयर आर लॉट ऑफ ग्रांट्स ऑल्सो दैट यू कैन गेट टू सेट अप योर ओन सेंटर्स, एंड सो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट. बट अगर आपके पास ये 10,000 20,000 रुपये भी नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी तरीका नहीं है, देन यू हैव टू प्रॉब्ली रिलाई ऑन जॉब्स. अच्छा, नाउ द लास्ट थिंग बिफोर आई क्लोज इज़ दैट कंपटीशन को लेके बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है. लोग बोलते हैं कि यार अगर आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं तो फिर कंपटीशन बहुत होता है. बट यार आप थोड़ा लॉजिकली सोचो. एवरी हॉस्पिटल हैज़ 5 or 6 डॉक्टर्स ऑफ द सेम क्वालिफिकेशन सिटिंग इन ईच डिपार्टमेंट. अगर आप ENT डिपार्टमेंट या मेडिसिन में जाते हो, 4 प्रोफेसर हर यूनिट के अपना क्लिनिक खोल रहे होते हैं. बहुत सारे, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग होम इज दैट द मल्टीपल डॉक्टर्स ऑफ द सेम फील्ड ऑल्सो देयर टुगेदर. तो आप ये सोचो ये कैसे चलता है ये मॉडल. हाँ, जब आप जाते हो तो फूड कोर्ट में सारे तो कॉम्पिटिटर ही हैं. फूड कोर्ट आप क्यों जाते हो, राइट? हेलमेट की दुकान जब जा रहे होते हो तो आप ऐसी गली में जाते हो जहाँ सिर्फ हेलमेट ही हेलमेट मिलते हैं. अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी होती है तो ऐसी दुकान में जाते हो जहाँ ज्वेलरी ही ज्वेलरी मिलती है. ये लोग नहीं सोचते क्या कि हमें यार कंपटीशन नहीं हो रहा क्या? हाँ, मेनी पीपल से सर आसपास ये डॉक्टर खोल रखा है तो इस वजह से वो सारे पेशेंट वहाँ चले जाते हैं. दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. This business model actually works better where there are many doctors together in the same place. The city of Mangaluru or Mangalore, you will see these very unique buildings where each chamber is hired by a doctor, many times of the same field and many times of different fields. But वहाँ पेशेंट जाते हैं. क्यों जाते हैं? क्योंकि there is this mass branding that occurs कि इस गली में या इस एरिया में या इस हॉस्पिटल में बहुत सारा ट्रीटमेंट और इलाज होता है, and patients don't like to wait. So sometimes when they go looking at reviews and all of that, many people know now reviews are fake. Okay, इतना तो लोगों को नॉलेज हो गया है कि many of these times these reviews are not genuine. So they go many times either word of mouth कि इस डॉक्टर को मिलना है, या कभी कभी वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते तो नेक्स्ट डॉक्टर के पास वो स्पिल हो जाता है कि हम आए हुए हैं ही तो इनको क्यों ना देख लें, तो कुछ ना कुछ तो हमारा इलाज शुरू हो जाएगा. और इस तरह से द क्रॉस सेल्स, because the volume of people come there are higher, cross sales improve. So don't have this thing in mind कि अगर हमको क्लिनिक खोलना है तो ऐसी जगह, एक सुनसान जगह पे खोलना है जहाँ कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है. वहाँ कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ कोई आता ही नहीं है. फिर आप बोलोगे यार डॉक्टर जगदीश बोला क्लिनिक खोलो और कोई नहीं आ रहा, तो ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा. दैट यू आर आइदर नियर हाउसिंग एरियाज, नियर societies,
or you are near allied healthcare facilities, so for example agar if there is a dental clinic or there is a physiotherapy center or there is a gynecologist or there is a pediatrician, आपने उनके पास भी एक जनरल प्रैक्टिस का खोल दिया है, सो वहाँ पर पेशेंट्स तो आ ही रहे हैं, तो उस वजह से वो पूल होता है. अदरवाइज 1 किलोमीटर रेडियस में अगर कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है और हाउसिंग और पॉपुलेशन है, देन दैट इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. बट वॉट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ नॉट दैट. वॉट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ यू शुड बी अवेलेबल. ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ आप 5 मिनट के अंदर पहुँच सकते हो, तभी वो सस्टेनेबल होगा और आपके पास पेशेंट्स आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा और आप उसको बेसिक केयर देख सकते हो और हम आपको उसके लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं. सो कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड. और बाकी जो बोलते हैं नहीं होगा नहीं होगा और हज़ार एक्सक्यूज़ होते हैं कि चीज़ें नहीं होने की, तो गाइस आई प्रे फॉर यू कि आपको एक ऐसी नौकरी मिले जो आपको पैसा देते रहे, भले ही आप कैसे भी काम करें. ऑलराइट, विशेस, बेस्ट विशेस ऑलवेज, एंड आई एम ऑलवेज देयर. साइनिंग आउट, डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी. टेक केयर.